Hello, all. Welcome to my channel, Sales Guru. I'm your sales buddy, Naveen Suri. In this episode, we are talking about different types of sales. I'm sure you have gone through with my last few videos where I'm talking about what is sales and what is marketing. Because what we feel that if we talk about some basic things that will help to our youngsters and the people to start their career in the sales, and that is the agenda of my this whole activity. मैं अपने सारे वीडियोस में आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको कई तरह के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप ऑफ सेल्स। बिकॉज अगर आप एक पोटेंशियल यंगस्टर्स हैं जो सेल्स में अपना कैरियर डिफाइन करना चाहते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि कितनी तरह की सेल्स होती है और किस सेल्स में आपको एंटर करना है बेस्ड ऑन योर पर्सनल चॉइस, योर कैपेबिलिटीज एंड योर इंटरेस्ट लेवल। बिकॉज अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डिफाइन योर सेल्फ कि आपको किस एरिया में जाना है, राइट? अगर आप एग्जिस्टिंग सेल्स प्रोफाइल में हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन स्विच टू योर सेल्स प्रोफाइल फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल्स टू अनदर टाइप ऑफ सेल्स। बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स एंड ईच सेल्स रिक्वायर्ड some common expertise and some of the very unique expertise to manage a different kind of sales. तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ट्रेड में होते हैं, जिस ट्रेड में हम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो शायद हमें दूसरे ट्रेड में ज़्यादा सूट करती है। तो लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बेस्ड ऑन दिस कन्वर्सेशन आई एम श्योर यू कैन आइडेंटिफाई विच एरिया यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सबसे बड़ी सबसे कॉमन सेल है एफएमसीजी एंड रिटेल सेल्स, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड शोरूम और वॉक इन कस्टमर सेल्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सब बड़ी कंपनीज हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है, कैडबरीज है, डेयरी मिल्क एटसेट्रा। दीज आर द कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट, एंड इनके सेल्स वालों का काम है कि आपको अपनी रिटेल सेल्स को इंक्रीज़ करना है, फुटफॉल को इंक्रीज़ करना है, कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके बताना है कंपनी को कि इस तरह का प्रोडक्ट इस एरिया में ज़्यादा बिकता है। प्लस आपको अपने जितने भी रिटेलर्स हैं उनको पुश करना है विद डिफरेंट स्कीम्स, विद डिफरेंट ऑफरिंग्स, कि वो कैसे आपको आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस सेल्स में आपका डायरेक्ट क्लाइंट से, जो कंज्यूमर है आपका आपके प्रोडक्ट का, उससे इंट्रैक्शन नहीं होती है। इस सेल्स में आपका जो कस्टमर है वो आपको एक रिटेलर है। इस सेल्स में आपको यू हैव टू इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद योर रिटेलर। अब ये रिलेशनशिप किस तरह से इस्टेब्लिश हो सकता है? रिलेशनशिप हमेशा इस्टेब्लिश होता है जब देर इज़ ए टू वे कम्युनिकेशन। तो पहला, आप अपने रिटेलर की कैपेबिलिटी को समझो, उसके कंज्यूमर बेस को समझो कि किस तरह क्लाइंट उसकी शॉप पे आता है, उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफरिंग दो, उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट दो वो ट्राई टू सेल। सेकंड, अगर वो आपका रिटेलर है और उसको कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक आपने उसका कुछ आउट ऑफ एक्सपायरी हो गया उसका कुछ माल, तो उसकी हेल्प करो ताकि वो उसको रिटर्न कर सके। बिकॉज अगर हम रिटेलर की बात करते हैं, रिटेलर इज प्लेइंग इन अ वेरी स्मॉल मार्जिन, राइट? इस तरह की सेल्स में यू हैव टू स्टैब्लिश ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद दैट। अब नाउ अगर हम बात करें इस कंप्लीट एफएमसीजी सप्लाई चेन की, एफएमसीजी कंपनीज जो है वो डायरेक्ट रिटेलर्स के पास नहीं जाती हैं। दे हैव कंप्लीट नेटवर्क एंड ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ नेटवर्क। सम कंपनीज हैज सीआईएफ एजेंट्स, राइट, ऑन डिफरेंट area part of the country. That CIF is earlier was very common when the VAT was there, because then across India there is no common you can say that taxation policies there. After GST, the CIF concept is quite reduced. Now majorly the company has a distributors. Each region has a one master distributors. If that area is covered by maximum areas covered, like if you talk about a UP is the biggest state in India, then that whole UP might have a multiple distributors under the one master distributors, and then this distributors has a multiple retailers under them. It's a complete chain.
So if suppose you're working with a company like Pepsi, right? So your important role is to not only to deal with the distributors. If you want to succeed in this role, you have to reach to the retailer level, and even you have to spend some time in the store also to see the behavior of the consumer. कंज्यूमर क्या मांगता है, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है, क्या उसकी डिमांड होती है। बिकॉज अगर हम एक लेट्स टॉक अबाउट ए कैडबरी एज ए चॉकलेट, राइट? कंज्यूमर का बिहेवियर जानते हुए पहले कैडबरीज टारगेट करती थी सिर्फ किड्स को, बिकॉज उनको लगता था कि चॉकलेट इज विल बी कंज्यूम बाय द किड्स ओनली। देन उनको ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि अगर उनको ग्रो करना है देन दे हैव टू ऐड मोर कंज्यूमर्स। तो उन्होंने अपनी अप्रोच को चेंज किया, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को चेंज किया, अब उन्होंने अपनी मार्केटिंग अप्रोच को चेंज किया, जिसमें उन्होंने किड्स को अपने एडवर्टाइजमेंट से बाहर करके यंगस्टर्स को लेके आए। धीरे धीरे उनको लगा कि नाउ दे सक्सीड ऑन दैट पार्ट, देन दे विल ट्राइंग टू रिप्लेस द चॉकलेट विद द स्वीट्स with the reason of health or with duplicacy and everything. So this is the way, right? You have to understand the consumer behavior, and then so this kind of sales you have lot of on the observation sales. Then we have a B2B kind of sales. B2B is basically a business to business, right? So इसका एक बहुत एग्जाम्पल है कि if you are selling a computer, right, and some IT hardware products. So you are majorly dealing with the organization. So it's a business to business sales where you have to manage organization sales. Then we have a sales called a B2C sales where we have to manage a direct consumer. Suppose you are selling a AquaGuard, right? In that AquaGuard you are directly dealing with the end consumer and you have to sell that. So it's another type of sales we are talking about. Then we have B2BC sales where the company has a policy to manage some key accounts also and to manage direct consumer also. Then we have a channel sales. Channel sales basically you create a channel network around your organization and manage your customer through channel, where the customer will not directly interact with your company, they are interact through the channel partners. And as a channel sales manager or channel sales representative, you have to manage a partner network. You have to take care of their requirements, you have to show them the investment done by the organization and push the partners to do the investment on your services and on your product. Then we have a dealer network, right? So let's take example of car selling, right? So all the car manufacturing has a dealer network where you can walk in the showroom and buy the car and all. Then we have a distributors network which basically common into you can say that FMCG product. Then we have a direct customers, as I told you that few of the companies, like suppose there is an organization who's selling services around the software development or software implement, so that you can go to directly to the customer and manage that customer. So that's a direct sales. Then we have a very rare, but it is there in the market, is called MLM, multi-level marketing, where that's majorly adopted by a few of the fast-moving consuming goods companies, like so they can sell to the person and ask them to further sell. So they are trying to create their consumer as their salesman, right? But to manage all the queries and everything, there is a link between companies and this MLM network, which is managed by the salespeople. So this is another level, another way of doing selling in the market. So what I'm trying to say you that there are the different type of sales. Now you have to see your personality. You have to identify which area is more suitable to you. If we talk about FMCG sales, where the value is less but volume is very high. If we talk about enterprise sales or software sales, where volume is very less and value is very high, and each sales type has a different set of requirements. So in my upcoming
episodes, I will cover each sales and give you more inputs about each sales, and also share some real time experience. Because if you talk about my experience, so I have experience in B2B sales, I have experience in B2C sales, I've managed channel sales as well. Of course, I am managing high end sales as well. So I'm trying to cover all these areas much in detail, which will help you to decide better. So thank you for today, and please give me your thoughts through the comments that how you find out this video. Share it, like it, subscribe it if you're not done that. Thank you very much for your time. See you.